Dear students, welcome to .B Educators again. Now we are going to start your next unit, which is Unit 6, Everyday Applications 2. तो अब इस चैप्टर में आप आगे फर्दर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग सीखेंगे या आगे फर्दर उनके बारे में स्टडी करेंगे. So here is a little bit introduction of this chapter. In this unit we will discuss the various multimedia applications like how to use the digital cameras and playing the audio CDs and burning the CD-ROMs. Furthermore, we will also know about the concept of using the graphics and imaging apps. And the next one, system applications of Linux, including a simple text editor, file management application, file compression and archiving application, and emulators like VMware and Wine. Okay, and apart from this, we will also learn about the application of file compression and archiving by using the file roller, and furthermore the process of decompressing and unarchiving with file ruler. So these are the basic topics that we will learn during this unit. So let's start with the first topic of this unit. This is multimedia applications. As we know that multimedia includes the text, images, video, audio, animation, graphics, everything within it, and it is used in each and every field nowadays, including education, business, commercial applications, entertainment, etc. Okay, most of the Linux distributions consist of some multimedia applications, including the multimedia audio players and CD players. इसमें हमारे पास कौन कौन से एप्लीकेशन आ जाती हैं, आपके ऑडियो प्लेयर्स भी आते हैं, सीडी प्लेयर्स भी आते हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड्स एप्लीकेशंस फॉर यूजिंग द डिजिटल कैमरास एंड बर्निंग सीडी रोम्स. राइट, इसमें आप लोग डिजिटल कैमरास भी यूज करते हो, आप सीडी रोम्स को बर्न भी करते हो, मतलब कि डाटा को उनके ऊपर राइट करना. एंड टू प्ले सम अदर मल्टीमीडिया फाइल्स लाइक MPEG वीडियो, you may have to download and install the additional software on your Linux system. Right, if you want to have these multimedia applications or these multimedia files, in order to play these files you have to download and install the softwares on your Linux system. उन softwares की help से ही आप इनको play कर सकते हो. And a few typical multimedia tasks and the applications that can be used to perform these tasks are discussed below. So यहाँ पे इन्होंने कुछ points include किए हैं जो आप include करोगे इन टास्क को परफॉर्म करने के लिए. The first one is using the digital cameras. How to use this digital cameras? A digital camera tool is used to download the photos from your digital camera in Linux. Right? इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो फोटोज हैं उनको डाउनलोड करते हैं in the Linux environment and playing the audio CDs. Use one of many audio CD players that come with the Linux. Right, you can play or use any particular CD player that come with the Linux environment. And the next point is playing the sound files. And in this environment of Linux, you can use the Rhythm Box or XMMS multimedia audio players. These are the two components that you can use for playing the sound files. You can also download other players from the internet. It depends upon your wish and your requirement. Okay, the last point is burning a CD. Well, use a CD burner like K3B to burn audio and data CD. Right? You can use this application or this programming module. So here is the explanation of this topic. The first one is using a digital camera. The Linux distributions include a digital camera application that can be used to download the pictures from digital cameras. Right? यहाँ पे हमारे पास एक digital camera application है जिसकी help से हम लोग इन pictures को download कर सकते हैं. Most of the Linux distributions include a digital camera application that can be used to download the pictures from the digital cameras. Right? So here are some list of steps that we can use in order to use this digital camera. Okay, the first point is connect your digital camera to serial port or USB port. It depends upon your wish. You can use one of them and turn on the camera. Okay, first of all आप अपने digital camera को आगे फर्दर connect करोगे किसके साथ, serial port के साथ, यहाँ पे USB port के साथ. Then आप अपने digital camera को on करोगे.
And the second point, start DigiCam. DigiCam can be seen in the main menu under the graphics or images सब मेन्यू. जब आपने इसको कनेक्ट कर लिया, आफ्टर दैट जब आपने इसको ऑन कर लिया, देन उसका आपको मेन मेन्यू वहां पे अवेलेबल मिलेगा अंडर द ग्राफिक्स और इमेजेस सब मेन्यू. ओके, एंड फ्रॉम द digicam menu select the settings, then go to the configure digicam. जो आपके digicam का मेन्यू है वहां से आप सेटिंग्स का ऑप्शन चूज करो, देन आफ्टर दैट go to configure digicam option. And the next point is a configuration dialog box appears. जब आप digicam के configuration के वाले ऑप्शन को आप चूज करते हो, देन उसके बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर होता है. Then click the cameras tab in the dialog box. Right, जो आपको डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है वहां से आप कैमरास वाली टैब को चूज करो and then click on the auto detect. And the next point is select your camera model from the camera menu. Right, आप अपने कैमरा वाले मेन्यू में से कैमरा के मॉडल को चूज करो. Then the next point is a new window appears. आपको एक न्यू विंडो मिलेगी and after a short while displays the photos in the camera. Right, जब वो विंडो अपीयर होती है उसके बाद थोड़े टाइम बाद आपको वहां पे आपकी फोटोज जो है वो डिस्प्लेमेंट मिलती है. कहाँ पे? कैमरा के अंदर. एंड देन click the thumbnails to choose the images you want to download. Right, जो आपके पास images अगर आप उनको डाउनलोड करना चाहते हो तो आप अपने thumbnail के ऊपर क्लिक करो, then select the camera, then go to download in order to download the images. DigiCam downloads the images. जो आपका DigiCam का जो ऑप्शन है वो आपकी इमेजेस को डाउनलोड करता है. These files can be saved in a folder. Right, it can be saved in any particular folder and the photos can be edited in the GIMP or your favorite photo editor. Right, जो अपने फोटोज डाउनलोड की है उनको आप इन दोनों में से किसी भी चीज की हेल्प के साथ आप उनको एडिट कर सकते हो as per your requirement and your wish. Okay, if DigiCam doesn't identify your digital camera, then you can still access the digital camera's storage media as a USB mass storage device, provided your camera supports USB mass storage. So, अगर आपका जो DigiCam है वो आपके डिजिटल कैमरा को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको असेस कर सकते हो. कैसे? विद द हेल्प ऑफ अ USB mass storage device जो आपके कैमरा के साथ उसको सपोर्ट कर रही है और USB mass storage को आगे बढ़कर वो सपोर्ट करती है. ओके, टू असेस द इमेजेस ऑन योर USB डिजिटल कैमरा यूज द फॉलोइंग स्टेप्स. तो आपके यहाँ पे कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स है जिनको आप फॉलो कर सकते हो इन ऑर्डर टू असेस द इमेजेस ऑन योर USB डिजिटल कैमरा. द फर्स्ट वन इज रीड द कैमरा मैनुअल. राइट, आप पहले अपने कैमरा के मैनुअल्स को रीड करो, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो एंड यूज द मेन्यू ऑप्शंस ऑफ द कैमरा टू सेट द USB मोड टू मास स्टोरेज. राइट, आप अपना उसके जो मेन्यू ऑप्शन है कैमरा का उसको यूज करो in order to set the USB mode. And the second point is connect your digital camera to the USB port by using the cable that came with the camera. Right, आप अपने डिजिटल कैमरा को USB पोर्ट के साथ कनेक्ट करो with the help of a cable जो आपके कैमरा के साथ ही आपको मिली है. एंड देन टर्न ऑन द कैमरा, अपने कैमरा को ऑन करो. देन लाइनेक्स डिटेक्ट्स द कैमरा. लाइनेक्स का जो एनवायरनमेंट है आपके कैमरा की सारी इंस्ट्रक्शंस को उसको प्रॉपर्ली डिटेक्ट करेगा एंड ओपन्स द कंटेंट्स ऑफ द कैमरा इन अ फाइल मैनेजर विंडो. ठीक है, अपने कैमरा के सारे कंटेंट्स को वो फाइल मैनेजर विंडो के अंदर ओपन कर देगा. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लिक टू सिलेक्ट द फोटोज. ठीक है, आप फोटोज को कौन सी को सिलेक्ट करना चाहते हो उनको सिलेक्ट करो. देन कॉपी देम टू योर हार्ड ड्राइव बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग देम इनटू अ सिलेक्टेड फोल्डर. राइट, आप उनको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो या आप उनको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो अपने पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर. Then the next point is close the file manager window. जहाँ पे आपकी फोटोज जो थी वो एक्सपैंड हुई थी उनको आप उस फाइल मैनेजर विंडो को अभी क्लोज कर दो. Then disconnect the USB cable from the PC. Right, USB केबल को डिस्कनेक्ट करो and then turn off your camera. It was the series of steps in order to use the digital camera. Okay, the next point is playing audio series. Okay, the first point in this topic is all Linux distributions take place in either KDE
और जीनोम सीडी प्लेयर एप्लीकेशंस। ओके, आपकी जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस आती हैं उनके वो मतलब कहाँ पे रिजाइड कर रही हैं, लेट्स सपोज KDE या फिर जीनोम जो आप डेस्कटॉप एनवायरनमेंट यूज कर रहे हो उनकी एप्लीकेशंस के अंदर। इन ऑर्डर टू प्ले एन ऑडियो CD वी नीड अ साउंड कार्ड, राइट। अगर आप एक CD प्लेयर जो है अगर आप उसको उसकी ऑडियो को प्ले करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ पर्टिकुलर साउंड कार्ड एंड दैट साउंड कार्ड मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड टू वर्क इन Linux। यस, जो आपने साउंड कार्ड आपको चाहिए जो है या जो आपने चूज किया है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसी होनी चाहिए, वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए किसके साथ, Linux के एनवायरनमेंट के साथ, ताकि वो Linux के एनवायरनमेंट के साथ कंपैटिबिलिटी के साथ प्रॉपर्ली उसके साथ वर्क कर सके। And the second point is in some distributions an audio CD can be inserted into the drive, right। जो आपकी Linux की कुछ distributions हैं उनमें ये ऑप्शन है कि आपकी जो CD है उसको आप एक ड्राइव के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। This will provide a dialog box and ask whether you want to play the CD with the CD player। Yes, after inserting your CD into the drive you will have a particular dialog box that will ask from your side that whether you want to play the CD with the CD player or not, okay। And the last point is if this dialog box doesn't appear, अगर वो dialog box appear नहीं होता है then locate an audio CD player by choosing the applications। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक ऑडियो CD प्लेयर को लोकेट कर सकते हो by going to the applications, then choose sound and video from the main menu। Done। These was the list of points which were related to playing the audio CDs। And the next topic is playing sound files। ओके, अब आपकी जो साउंड फाइल्स हैं उनको प्ले करने के लिए आप कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं या कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। द फर्स्ट पॉइंट इज टू ओपन एंड प्ले दिस साउंड फाइल्स वी कैन यूज रिदम बॉक्स और XMMS। तो आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं, या तो आप रिदम बॉक्स को यूज कर सकते हो या फिर आप XMMS को यूज कर सकते हो। ठीक है, यू कैन स्टार्ट रिदम बॉक्स बाय चूजिंग द म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन फ्रॉम द मेन मेन्यू इन सेवरल डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट। If you want to start with the rhythm box, then you can choose the music player application from the main menu, including the Debian and Fedora। मतलब Fedora and Debian ऐसी distributions के अंदर आप rhythm box को अपने मेन मेन्यू के थ्रू चूज कर सकते हो प्ले करने के लिए। When you first start Rhythm Box, it displays an assistant that prompts you for the location of your music files to start so that Rhythm Box can manage your music library। जब आप फर्स्ट अपने रिदम बॉक्स को स्टार्ट करते हो तो वो आपके पास एक असिस्टेंट की जो अगर यहाँ फिर आप विंडो बोल सकते हो, डायलॉग बॉक्स बोल सकते हो, जो आपको मिलता है एंड प्रॉम्प्ट्स, वो आपसे लोकेशन मांगता है आपकी म्यूजिक फाइल्स की, ताकि जो रिदम बॉक्स है वो आपकी जो म्यूजिक लाइब्रेरी है उसको वो प्रॉपरली मैनेज कर सके, उसको वो ऑर्गेनाइज कर सके। एंड देन आफ्टर आइडेंटिफाइंग द लोकेशंस ऑफ म्यूजिक फाइल्स, जब आपकी म्यूजिक फाइल जब उनकी लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई हो गई है, देन इट बिगिंस एंड शोज द लाइब्रेरी इन एन सिस्टमाइज्ड और सिस्टमेटाइज्ड वे। यू कैन देन सिलेक्ट म्यूजिक एंड प्ले इट, राइट। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया आपके लोकेशन को प्रॉपरली, आफ्टर दैट रिदम बॉक्स जो है वो आपके उस लिस्ट को शो करेगा एक प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे में, ताकि उनमें से म्यूजिक को सिलेक्ट करके उसको प्ले किया जा सके। And another music player that can play different types of sound files is XMMS, right। आपके पास रिदम बॉक्स के बिना जो नेक्स्ट कंपोनेंट है जिसकी हेल्प से आप अपनी जो साउंड फाइल्स उनको प्ले कर सकते हो, दैट इज नोन एज द XMMS। ओके, XMMS can be started by selecting the audio player application from the main menu, right। It can be started with the help of audio player applications जो आपकी मेन मेन्यू के अंदर डिस्प्ले की हुई है। And the next point is after XMMS begins, you can open a sound file by selecting the window menu and then go to the play file or by pressing the L, okay। And the next point is then select one or more music files from the load file dialog box, राइट। आप इनमें से कोई भी एक या दो जो आपकी म्यूजिक फाइल्स हैं उनको आप लोड फाइल डायलॉग बॉक्स से सिलेक्ट कर सकते हो, देन क्लिक ऑन द प्ले बटन, ओके, एंड देन XMMS starts playing the sound file। And by switching to the next topic,
here is the next topic, that is burning a CD, right? How do you burn a particular CD in the Linux environment? Here are some points that you can follow in order to perform this option. Well, the first point is Linux distributions also come with standalone GUI programs that enable you to easily burn CDs and DVDs, right? यहाँ पे आपके पास कुछ GUI based programs होते हैं जिनकी help से आप अपनी CDs को और DVDs को easily burn कर सकते हो. And the second point is, for example, K3B. It is a popular CD and DVD burning application for KDE that is available in Nopis and SUSE. तो ये इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर आपके पास K3B जो है एप्लीकेशन अवेलेबल मिलती है, जो कि आप यूज कर सकते हो CDs और DVDs को बर्न करने के लिए. And the third point is most of the CD burning applications are easy to use, right? आपके पास ये कुछ एप्लीकेशंस होती है वो काफी इजीली आप उनको यूज कर सकते हो. बेसिकली वी कलेक्ट द फाइल्स दैट वी वांट टू बर्न टू द सीडी और डीवीडी एंड देन द बर्निंग प्रोसेस इज स्टार्टेड. आपको सबसे पहले उनको सिलेक्ट करना पड़ता है उन फाइल्स को दैट यू वांट टू बर्न टू योर सीडी और डीवीडी. And for this work, your PC must have a CD or DVD burner installed, right? अगर आप उन फाइल्स को अपनी CD या DVD के ऊपर बर्न करना चाहते हो, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपके PC के अंदर जो CD और DVD बर्नर है वो इंस्टॉल्ड होना जरूरी है. And the next point is the K3B Windows upper part is for browsing the file system to choose what you want to burn onto a CD or DVD, right? अगर आपने ये ऑपरेशन जो है परफॉर्म करना है तो आपकी जो K3B की विंडो है उसकी अपर पोर्शन जो है that is used for browsing the file system so that you can select those files that you want to burn onto CD or DVD. And the upper left corner displays the CD writer device installed, right? And the next point is to burn a CD. We begin with one of the projects displayed in K3B Windows lower part, right? अगर आप एक CD को burn करना चाहते हो तो आप कहाँ से start करोगे? One of the projects that are displayed on the K3B Windows lower part, जो उसके lower part के अंदर projects जो है वो display किए गए हैं, तो आपको वहाँ से start करना पड़ेगा. Okay. The next point is finally you are required to add the files and burn the project to the CD or DVD. जब आपने files को select कर लिया then आप उनको क्या करोगे? Add करोगे in order to burn the project to your CD or DVD. Okay जी. The second last point is this is done by selecting. आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो लेकिन उसको कैसे परफॉर्म करोगे? कौन से वहाँ पे steps होंगे? Select the project, then go to burn, or you can also press the Ctrl plus B in order to burn the files. For an audio CD, you can drag and drop MP3 files as well as audio tracks. And the last point is to burn the CDs. K3B needs the external command line programs CD record and CDR-DAO. तो आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप अपनी सीडीज को बर्न कर सकते हो. एंड K3B also needs the grow is off program to burn DVDs. ठीक है, आपके पास जो K3B एप्लीकेशन है उसको भी आगे फर्दर प्रोग्राम चाहिए. कौन सा? grow is off program in order to burn the DVDs. So these were some points that were related to burn the CDs. And the next point is using the graphics and imaging apps. अगर आपने आगे फर्दर जो ऑडियो या साउंड फाइल्स के बिना ग्राफिक्स या इमेजिंग एप्स को यूज करना हो तो आपके पास कौन कौन सी चीजों का होना जरूरी है? Well, in order to work with images and graphics, you can use the graphics and imaging applications. Okay, and there are the two most popular applications that are available under the Linux environment. The first one is the GIMP, जिसको हम आगे फर्दर कैसे उसकी फुल फॉर्म क्या है? GNU Image Manipulation Program. The GIMP is a program used for viewing and performing the image manipulation tasks. तो ये आपके पास एक ऐसा प्रोग्रामिंग मॉड्यूल है जिसको हम यूज करते हैं अपनी इमेज की फाइल्स को व्यू करने के लिए या उनके ऊपर कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए या फिर उनके ऊपर कोई भी मैनिपुलेशन परफॉर्म करने के लिए.
और वो मैनिपुलेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, लाइक इमेज कंपोजिशन, या तो आप अपनी इमेज को कंपोज कर सकते हो, या फिर फोटोज को प्रॉपरली रिटच करना, या फिर इमेज को क्रिएट करना. सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ GIMP. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज GGV, जिसको हम बोलते हैं जीनोम होस्ट व्यू. So it is a graphical application which is capable of displaying the PostScript files. तो आपके पास GGV क्या है, एक तरह की graphical applications है जिसको आप अपनी PostScript files को display करवाने के लिए use करते हो. So these were the two programming modules, or you can say these are the apps that you can use in order to process the graphics and imaging apps. Okay जी. The next point is system application. तो आपके पास सिस्टम के अंदर कौन सी एप्लीकेशंस हैं? The various system applications provided by Linux are discussed below. Here are a list of system application that you can use or access under the environment of Linux. The first point is a simple text editor. As we know that text editor is what? This is a program that is used to edit or format or manipulate the text. You can create your text, you can perform the operations on your text like editing them, coloring them, and giving them effects, and increasing or decreasing its size. So here are some points that are related to this topic. The first point is the simple text editor is one of the applications that lend itself to this technique of input. The editors like OpenWriter can be used to edit these type of documents, right? इस सबसे पहले आप जो भी आपका simple text editor कोई भी आप use कर रहे हो, तो इसमें आप क्या करते हो, अपने documents को, अपने text को edit करते हो. अपने टेक्स्ट को आप क्रिएट भी कर सकते हो, उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, उसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है. उसके ऊपर आप कोई भी उनको स्पेशल इफेक्ट्स दे सकते हो. सो दिस इज द बेसिक मोटिव ऑफ टेक्स्ट एडिटर. However, the functionality as well as formatting offered with the applications like OpenWriter is actually overkill for configuration files, etc. Here, GEDIT is of much use. तो आप यहाँ पे GEDIT को हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन को यूज करते हैं, जो कि काफी ज्यादा कॉमनली मतलब इसके अंदर मानी जा रही है. And the second point is the GEDIT application is analogous to WordPad or Notepad. तो ये आपके पास WordPad और Notepad की तरह ही काम करती है. WordPad and Notepad are the commonly used programs that we use under the Windows environment too. These are also known as the text editors that we use in order to format our text in an convenient and easy way. And GEDIT is considered as an efficient text editor having a nice GUI, right? GEDIT जो है वो आपको एक तरह का GUI based मतलब graphical user interface provide करती है, जिसकी help से आप अपने text को efficiently edit कर सकते हो. And the last point is in order to launch GEDIT, अगर आप इसको launch करना चाहते हो तो आप कौन से steps हैं जिनको आप follow कर सकते हो. First of all, select the main menu, then go to accessories, then go to text editor. Okay, and alternatively we can type the GEDIT in the command line. Yes, आप command line के अंदर अगर इसको access करना चाहते हो तो GEDIT को type करो easily, तो वो आपके पास launch हो जाएगी और display हो जाएगी. Okay. The next application that we are having in Linux environment is file management applications. So file management is what? This is a task that we use in order to manage, organize our files under this environment. Well, a file manager application is a major part of the desktop environment, right? This is a very major part that is considered to be an important task of desktop environment. It allows us to easily create, access and manage all the files on the system, right? With the help of file management, we can easily create our files, access them, and we can also manage them on our system. Furthermore, traditional file management in Linux would have been done via the command line, right? जो आपके ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनके अंदर लाइनक्स के अंदर आप फाइल मैनेजमेंट को कैसे मतलब परफॉर्म कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन. एंड
It was requiring some deeper knowledge of several commands to list, create, delete or edit files and their properties, right? अगर आप इस environment के अंदर इन files को assess कर रहे हो या उनको create कर रहे हो या delete कर रहे हो with the help of commands, then you should have a deeper knowledge. You should have a complete knowledge of these commands, how to operate them, how to type them, what are the syntaxes of these files, and what are the basic commands related to every operation of these files. Okay, a file manager provides a graphical and more intuitive way to handle these tasks, right? ये जो फाइल मैनेजर एप्लीकेशन है वो आपको क्या प्रोवाइड करवाती है, ग्राफिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाती है जिसकी हेल्प से आप इन सारे टास्क को इजीली आप उनको हैंडल कर सकते हो. सो द सेकंड पॉइंट इज Nautilus is considered as the file manager and viewer of Genome. तो Genome के अंदर आपके पास एप्लीकेशन आती है कौन सी, Nautilus नाम की, जो जिसको आप एज अ फाइल मैनेजर यूज कर सकते हो. Here we will discuss some basic functions of Nautilus and some tips on its configuration. So here is a simple interface of this application. In figure, we have shown the standard window of Nautilus. ये इसकी window है. The default view of the folder's content is the icon view, just featuring an icon, right? And the file name for each file, right? And if configured accordingly, a preview of the file's content can be provided. When you double click the folder icon, a new Nautilus window opens displaying the folder's content. आप इनमें से जो आपको इंटरफेस दिखाया गया है, इनमें से अगर आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली एक पर्टिकुलर आइकन के फोल्डर को अगर आप क्लिक करते हो, उसके ऊपर डबल क्लिक करते हो, तो आपको एक न्यू Nautilus विंडो जो है वो ओपन मिलेगी और वो आगे फर्दर उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स पड़ी हैं, जितने भी कंटेंट्स पड़े हैं, उसकी लिस्ट को डिस्प्ले करवा देगी. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, if you like browser like file navigation, then you can use the Nautilus browser interface. Right click the folder के ऊपर right click करो, then select the browser folder. राइट अगर आप एक फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक कर रहे हो तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा ब्राउज फोल्डर इन द सेंस कि वो उसको फोल्डर को एक्सपैंड कर देगा और उसके अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं उनको आगे फर्दर लिस्ट में परफॉर्म करवाएगा. अ न्यू Nautilus window opens providing the normal functionality, right? And but with the browser's look and feel. To navigate folders and files, you can now use the back, forward, up buttons as you would do in a web browser, right? अगर आप किसी फोल्डर को या किसी फाइल को नेविगेट करना चाहते हो तो अप्रोप्रिएटली जो ऑप्शंस हैं, whether it is back, forward, up or down, then you can access them or click them. The next point is Nautilus supports drag and drop for the file management. ठीक है, आपके पास फाइल मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी ऑप्शंस है ड्रैग एंड ड्रॉप के. एंड वी कैन सिंपली ड्रैग एनी फाइल फ्रॉम द डेस्कटॉप टू एन ओपन Nautilus window and drop to its final destination. Right, आप जैसे हम नॉर्मली फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो वो ऑप्शन आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो. एंड टू मूव द फाइल्स बिटवीन द डायरेक्टरीज. If you want to move the directories, then or you want to switch your files between the directories, then open the source directory containing the file to move. ठीक है, आपको सबसे पहले आप अपनी सोर्स डायरेक्टरी है उसको आप सबसे पहले ओपन करोगे. देन सिलेक्ट फाइल प्लस ओपन द लोकेशन. Then how can you open that location? First of all, enter the path to the target directory. Then drag the files to move to the Nautilus window holding the target directory. Right, पहले आप उसको फाइल को ओपन करो, लोकेशन को ओपन करो, देन उसमें से अपना पाथ एंटर करो और टारगेट डायरेक्टरी का, देन वहां से अपनी फाइल्स को डायरेक्ट करो ताकि आप उसको Nautilus विंडो के अंदर जिसने टारगेट डायरेक्टरी को होल्ड करके रखा हुआ है वहां पे उनको मूव कर सको. Then files and folders can be moved to and from an open Nautilus window and the desktop, right? So the next point is, in order to create several copies of a file, अगर आप एक फाइल की कॉपीज क्रिएट करना चाहते हो तो आप कौन से ऑप्शन यूज कर सकते हो? यूज द एडिट प्लस डुप्लीकेट. तो इसके अकॉर्डिंगली इस ऑप्शन को चूज करके आप अपनी फाइल के डुप्लीकेट कॉपीज जो है इनको आप क्रिएट कर सकते हो. For simple cut, copy and paste of files, use the edit menu or right click the file icon
then selecting the appropriate item from the context menu that appears. And to rename a file, right click it and then select the rename option. And Nautilus includes basic CD burning functionality. If you created a directory holding data you want to backup by just burning it to a CD, click Places plus CD Creator and then drag the folder holding the relevant data on the CD or DVD creator window. So the last point is select file, press write to the disk to copy the data to CD or DVD. If you want to write the data to the CD or DVD, then you can choose the file plus then option write to disk. So these were some main points which were related to Nautilus and its manipulation. Here is the process of file compression and archiving. So there are 4 points which are basically related to file compression and archiving process. The first point is it is beneficial to store a group of files in one folder for transfer to another directory, for transfer to another computer or for easy backup, right? हमें पता है कि हमारे पास अगर मल्टीपल फाइल्स है तो हम क्या करते हैं उनको एक फोल्डर के अंदर या एक पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर उनको ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम उनको इजीली ट्रांसफर कर सकें किसी और डायरेक्टरी के पास या फिर किसी और कंप्यूटर के पास या फिर उनको इजीली हम लोग बैकअप उसका करके रख सकें. It is also useful to compress the large files. कॉम्प्रेस का मतलब क्या होता है कि मतलब आपकी जो फाइल्स हैं उनका कंटेंट तो सेम ही रहेगा बट वो आपके पास बहुत शॉर्ट अमाउंट ऑफ स्पेस जो है उनको वो ऑक्यूपाई करेगी. कंप्रेस्ड फाइल्स टेक अप लेस डिस्क स्पेस एंड डाउनलोड फास्टर वाया द इंटरनेट. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज नाउ let's understand the difference between archive a file and a compressed file. So an archive file is defined as a collection of files. हमें पता है जो आपकी archived file होती है उसके अंदर क्या है आपकी फाइल्स की कलेक्शन एंड डायरेक्टरीज की कलेक्शन है जिसको स्टोर करके रखा गया है एक सिंगल फाइल के अंदर. The archive file is not compressed. It uses the same amount of disk space as all the individual files and directories combined. जो आपकी आर्किव फाइल होती है वो प्रॉपर्ली कंप्रेस नहीं की होती है. वो जितनी फाइल्स उसके अंदर पड़ी हैं उनके अकॉर्डिंगली वो अप्रोप्रिएटली टोटल अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस जो है वो उसको ऑक्यूपाई करेगी. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अब हमारे पास कॉम्प्रेस्ड फाइल क्या है. A compressed file is defined as a collection of files and directories that are stored in one file. Then तो आपके पास जो कंप्रेस्ड फाइल है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं. दैट इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज जिनको आप एक फाइल के अंदर स्टोर करके रखते हो एंड स्टोर्ड इन अ वे दैट यूज द लेस डिस्क स्पेस देन ऑल द इंडिविजुअल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज कंबाइंड. अब कंप्रेस्ड फाइल में क्या होता है आपने जितनी भी फाइल्स या डायरेक्टरीज को एक फाइल के अंदर या एक लोकेशन के अंदर आपने उनको स्टोर करके रखा है वो सारी की सारी फाइल्स जो इंडिविजुअली क्रिएट की गई हैं वो कम से कम जो डिस्क स्पेस है उसको वो ऑक्यूपाई करती है जो कि पॉसिबल नहीं होता आर्किव फाइल में. So if disk space is a concern, compress rarely used files or place all such files in a single archive file and then compress it. Right? आप क्या कर सकते हो अपनी फाइल्स को एक फाइल के अंदर रखो देन उसको आर्किव करो उस फाइल को. आफ्टर दैट यू कैन इजीली compress it. So the next point is emulators. What are the emulators? As we have discussed about this topic in our previous unit. So here are some important points which are related to emulators. First point is file roller is a graphical utility included in Red Hat Enterprise Linux. फाइल रोलर जो है आपके पास वो एक तरह की ग्राफिकल ऑप्शन आप उसको मान सकते हो जिसको कि आगे फर्दर रेड हैट में लाइनक्स के अंदर इंक्लूड किया गया है. फाइल रोलर कैन compress, decompress and archive the files in a common Unix and Linux formats. It has a simple interface and extensive help documentation. तो फाइल रोलर को आप किस चीज के लिए यूज कर सकते हो अपनी फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए या फिर उनको आगे फर्दर डीकंप्रेस करने के लिए या उनको आर्काइव करने के लिए. And the next point is to start file roller you can select archive manager from the applications
ठीक है, या फिर मेन मेन्यू से जो कि पैनल के ऊपर है, देन गो टू द सिस्टम टूल्स सब मेन्यू. ओके, फाइल रोलर इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड इनटू द डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स एंड नॉट दिस, वो इंटीग्रेट भी किया गया है इन एनवायरनमेंट्स के अंदर. And the last point is on using a file manager, for example Nautilus. If you are using a Nautilus, then you can double click the file you wish to unarchive or decompress to start the file loader. मतलब कि आप नॉर्मली जिस फाइल को आप अनआर्किव करना चाहते हो या डीकम्प्रेस करना चाहते हो, आप नॉर्मली उनके ऊपर डबल क्लिक कर सकते हो. The file roller browse the windows appears, जो आप जब आप उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो आपके पास फाइल रोलर का जो ब्राउजर है उसकी विंडो जो है वो अपीयर हो जाएगी with the decompressed and unarchived files in a folder for you to extract or browse. So this was a list of steps. So here is the point of decompressing and unarchiving with the file roller. If you want to perform the decompressing or unarchiving the files with the help of file roller, then what will be the steps that you can follow? To unarchive and decompress a file, click on the open button on the menu. सबसे पहले आप अपने मेन टूल बार से जो ओपन बटन का ऑप्शन है उसको चूज करो. देन अ फाइल मेन्यू पॉप्स अप, आपके पास एक फाइल मेन्यू जो होगी वो पॉप अप हो जाएगी. देन अलाउइंग यू टू चूज द आर्काइव यू विश टू मैनिपुलेट. ओके, सो क्रिएट आर्काइव्स विद फाइल रोलर. हाउ कैन यू क्रिएट द आर्काइव्स विद द हेल्प ऑफ फाइल रोलर? There is a list of steps. The first point is by using the file roller, we can create the archives of our files and directories, right? By using our file roller, we can easily create our archives of our files or directories. And to create a new archive, click new on the toolbar. सबसे पहले आप अपने toolbar के ऊपर new को option को choose करो. Then a file browser जो है वो पॉपअप हो जाएगा आपके पास. उसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आर्किव के नेम को स्पेसिफाई कर सकते हो एंड देन द कंप्रेशन टेक्निक. ओके, द थर्ड पॉइंट इज टू ऐड फाइल्स टू योर न्यू आर्किव. क्लिक ऑन द ऐड बटन, देन व्हिच ओपन्स a browser window that you can navigate to find the file or directory to add to the archive. And the last point is click add when you are finished and click on the archive, then go to close the archive. So these were some options that were related to decompression and archiving. Here is next topic of emulators. Well, here are various kinds of emulators for numerous platforms. So they are easily obtainable for simulating the complex operating systems like MS Windows. आप emulators की help से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे complex kind of operating system है like MS Windows है, या फिर उनको आप easily simulate कर सकते हो. So उनमें से कुछ जो emulators हैं उनको यहाँ पे 1.1 define किया गया है. First हमारे पास है VMware. अब ये कौन सी एप्लीकेशन है? This application is considered as an enterprise class virtual machine. इसको आप एक virtual machine की तरह यहाँ पे consider किया गया है. It is capable of running numerous versions of an operating system on a single computer. Right? इसके पास कौन सी capability होती है? मतलब इसकी help से आप operating system की अलग-अलग versions को run कर सकते हो एक single computer के ऊपर. For instance, numerous versions of Windows operating system can be executed on a single Linux machine. Right? So this was the concept of VMware. Here's the basic interface of this application. And the next one is Wine. It is an application which is implementing the Windows API on top of the native X window system is known as Wine. तो आप जो जिसकी हेल्प से अपनी विंडोज की API है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को आप रन करते हो या उसको इम्प्लीमेंट करते हो, इस एप्लीकेशन को हम वाइन कहते हैं. And the next point is the native X window system is utilized by the graphical environments of the KDE and GNOME. तो आपके पास नेटिव एक्स विंडो सिस्टम जो है उसको आप किसकी हेल्प से मतलब यूज कर सकते हो या फिर उसको यूटिलाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल एनवायरनमेंट्स. किसके एनवायरनमेंट्स? KDE के या फिर
genome. So this was the end of this unit, which was unit 6, everyday applications second. I hope all the topics of this unit are properly covered and elaborated. So thank you so much.